बेटा फैक्टर्स आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं फैक्टर्स ऑन विच वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स। पहला है डेंसिटी। You know V is equal to gamma P upon rho. Gamma is the atomicity. Gamma is a ratio of specific heat due to specific constant pressure to the specific constant volume. P is the pressure over the density. What is gamma? Gamma is the ratio of specific heat at constant pressure to specific heat constant volume. P is the pressure over the density. Now, and it's got vivid from the formula, velocity of sound is inversely proportional to density. Okay with you? Density decreases, velocity decreases. Okay. It means at constant gamma and P, V is inversely proportional to density. Okay. Next is effect of pressure. Effect of pressure. अब बच्चे इफेक्ट ऑफ प्रेशर मतलब प्रेशर का वेलोसिटी ऑफ साउंड पे क्या फर्क होता है। अगेन V is equal to under the root gamma P upon density। मतलब याद देखिए, we know gas equation for one mole of a gas PV is equal to RT। ये बच्चों gas equation for one mole of a gas PV is equal to RT। यहाँ से P is equal to RT upon V। ठीक है तो put here this is equal to under the root gamma RT upon V into rho। this is V आ गया। ठीक है जी। what is V into rho? V into rho is the mass of the gas। mass of the gas is equal to under the root gamma RT upon N। mass of the gas, that is mass of the one mole of a gas। one mole of a gas, that is Avogadro's number of molecules। Avogadro's molecules, और ये भी कह सकते हैं it's a sort of molecular mass of the gas। molecular mass of the gas भी कह सकते हैं। अच्छा, so इसमें देखो ध्यान से बताओ, because gamma is constant, R is constant, M is constant। M is constant, gamma is constant, R is constant। It means V depends upon temperature, but at a constant temperature, V जो है ये constant होती है। It means V is independent of pressure। V is independent of pressure at constant temperature। तो जो है velocity pressure पर डिपेंड नहीं करती अगर temperature of the gas is constant। Next is अभी डेट को कह रहे हम कि V इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो बताओ इसमें तो क्या बचा, V is equal to under the root of प्रूव करके रहे R T upon M। ठीक है तो gamma is constant, R is constant, M is constant। V is directly proportional to temperature। ठीक है तो टेम्परेचर अगर हॉट एयर होगी, जैसे आपका हॉट डे होता है, उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होती है एज कंपेयर विद दैट डे जबकि कोल्ड डे होता है। इन विंटर्स वेलोसिटी इज लेस, इन ड्यूरिंग समर्स द वेलोसिटी इज मोर। अगेन है टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स। temperature coefficient।
coefficient क्या होगा which is let of velocity coefficient velocity Vt is velocity at t degree c Vt. The velocity at t degree c Vt, velocity at 0 degree c is v naught. It means what is temperature coefficient of velocity? It is change in velocity per unit rising temperature. Change in velocity per degree C rising temperature. ठीक है ये आ गया इसको कहते हैं temperature coefficient of velocity for gas. Now Vt is equal to gamma p upon t. V naught is equal to V0 is equal to gamma p upon t naught. So T and T are absolute temperature. Temperature is equal to under the root gamma p t plus 273 is equal to gamma p upon 273. These are absolute temperature, they are temperature degree C. Yeah. So you just Vt minus V0 is equal to ये आ गया हमारे पास Vt minus V0 is equal to 0. It's wrong, but मैं गलती से लिख गया. V is equal to under the root is direct proportional to T. So this is absolute temperature. Direct proportional to T. So Vt is T plus 273 and V naught is direct proportional under the root 273. पहले क्वेश्चन कर देखिए बच्चों में मिस्टेकिंग थोड़ा आपसे माइंड कारण इधर डिवाइड करो या क्या Vt minus V0 is equal to T plus 273 upon 273. ठीक है तो क्या दिस राइट इक्वेशन ठीक है डिवाइड 1 by 2 ये 1 आ गया ये 2 आ गया इनको डिवाइड करके ये आ गया नाउ ये आ गया बच्चा हमारे पास Vt upon V0 बराबर तो अंडर द रूट 1 plus T upon 270 ये आ गया ठीक है तो and we get from this equation we get 1 plus T upon 273 half Vt upon V0 ठीक है तो now we have a binomial theorem 1 plus x की पावर n मैंने कई बार यूज किया बच्चा ये थ्योरम मैंने कई बार यूज की है बाइनोमियल थ्योरम एंड इज पावर x is less than 1 if it is so in that case क्या होगा बच्चा it will be expanded as nx plus higher powers are neglected देखो ठीक है तो so ये आ गया 1 plus 1 nx ये आ गया 1 plus t upon 3 half into 273 Vt upon V0 ये आ गया बच्चा ठीक है तो ये आ गया Vt upon V0 is equal to 1 plus t upon 4 so the 540 this is what we get ठीक है ये आ गया Vt minus V0 upon t is equal to minus 1 t upon 546 146 is equal to alpha
equal to alpha into V naught. This is equal to 332 upon 546. Why? Because V naught as you is 332 meter per second. Yeah, 2 meter per second. Let's convert it 0.602 to meters per second per degree C. Per degree C is equal to 0.602 meter second inverse centigrade inverse. ये आ गया बच्चा, ठीक है. इसकी वैल्यू आई 0.602 मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सी. This is the, it means this is the temperature coefficient of the velocity coefficient for the gas. Next is तो हम बात करेंगे effect of humidity. Effect of humidity. नंबर तो हम करेंगे इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी. आपको मालूम है जब ह्यूमिड एयर होती है, मतलब उसमें वाटर वेपर्स होते हैं, उसकी डेंसिटी एयर की डेंसिटी कम होती है कंपेयर विद एयर की डेंसिटी उसमें जब वो ड्राई होती है. मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है कंपेयर विद ड्राई एयर. तो इट मीन्स velocity is equal to gamma p rho m moisture and density दिया गया हमारे पास gamma p rho dry air, moisture dry air. Just divide the force. M upon Vd is equal to under the root rho d upon rho m. So this relation. Because sigma rho d is greater than rho m. It means Vm is greater than V dry. इसका मतलब velocity in the moisture is more compared to velocity in the dry air. इस विषय से effect of amplitude. अच्छा बच्चों देखो इस रिलेशन में गामा इज इक्वल टू अंडर द रूट गामा पी अपॉन रो. इसमें किसी भी जगह पे एम्पलीट्यूड अपेयर नहीं हो रहा है बच्चों. नो एम्पलीट्यूड इज अपेयरिंग. दिस प्रेशर इज गामा, दिस इज रो. इट मींस the velocity of the sound is independent amplitude. तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि sound होते हैं sound waves. Sound wave travel as longitudinal waves. ठीक है रहता है. With the movement with the to and fro movement of the particles of the air in the direction of the propagation of wave. मतलब अगर ये wave ऐसे travel कर रही है तो particle ऐसे vibrate करते हैं to and fro in the direction of the wave. ठीक है तो maximum amplitude जो होता है वेव का होता ही होता है. तो ये इस पे पेयर नहीं हो रहा, इसका मतलब वेलोसिटी इतना एम्पलीट्यूड. सिमिलरली लैम्डा भी पेयर नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी पेयर नहीं हो रही, इसमें ना तो लैम्डा वेवलेंथ पेयर है, ना ही वेलोसिटी, ना ही फ्रीक्वेंसी पेयर है, ना वेवलेंथ ना फ्रीक्वेंसी पेयर है. इट मींस वेलोसिटी साउंड इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी. उत्तर इस एक्सप्रेशन में ना लैम्डा है ना फ्रीक्वेंसी है. तो it means velocity of sound is independent of wavelength and frequency. Clear? It means whatever the wavelength of the sound waves, whatever frequency of the waves, the velocity is always constant. Effect of velocity of effect of wind. अच्छा बताओ, suppose sound is traveling in this direction with the velocity v. ये source है, ये listener है.
यहां से साउंड ट्रेवल कर रही है, ओके, एंड विंड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन विद द वेलोसिटी v, ओके, एंगल में थीटा है, ठीक है, w द विंड वेलोसिटी, दिस इज द विंड is blowing in this direction, this sound waves are flowing in this direction, ठीक है, moving in this direction. So in this case w और v है, इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, ओमेगा cos of theta. It means the velocity अब बढ़ जाती है, the velocity of sound in wind is cos of theta. It means विंड के जब विंड ब्लो करती है ना बेटा, तो साउंड जो है वो फास्टर मूव करती है, बिकॉज इसकी वेलोसिटी में विंड वेलोसिटी ऐड होगी, ठीक है, तो इट मींस द विंड इज ब्लोइंग, द साउंड इज ब्लोइंग फास्टर टू द लिसनर. नेक्स्ट इज एटॉमिसिटी. देखो क्या, v is equal to under the root gamma p upon rho, ठीक है. देखो gamma क्या होता है, gamma is the ratio of specific heat at constant pressure to specific heat at constant volume, ठीक है. अब एटॉमिसिटी क्या होती है, मोनोटॉमिक एटॉमिसिटी क्या होती है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 1 होती है ना. तो गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा आप निकाल चुके हैं, गामा की वैल्यू निकाल चुके हैं, इट इज 5/3. फॉर मोनोटॉमिक गैस गामा इज 5/3, एंड फॉर डायटोमिक गैस ये है मोनोटॉमिक डायटोमिक गैस के लिए डायटोमिक गैस के लिए ये होती है 7/3, gamma is 7/3. So in this case, it means velocity of sound depends upon the atomic or the atomicity of the, it depends on gamma not है, gamma depends on atomicity, तो monatomic गैस की डिफरेंट होगी और डायटोमिक गैस की डिफरेंट होगी. This is the fact कि velocity of sound depends upon the atomicity of the gas. So with this I finish the chapter, and tomorrow I will take